Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting lecture number 1 and the topic is A Day with Neha from your English books We Learn English Class 2 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitKan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. Let's start our topic. Our topic is unit number 1, A Day with Neha. At the park. One day Neha goes to the park. She sees an egg on the grass. एक दिन नेहा पार्क जाती है और उसे वहाँ घास पर एक एग दिखाई देता है. शी लुक्स अप टू सी अ नेस्ट इन द ट्री. वो ऊपर देखती है और उसे दरख्त में एक नेस्ट यानी कि घोंसला नज़र आता है. शी क्लाइम्स अप टू पुट द एग बैक इन द नेस्ट. वो उस एग को लेकर दरख्त पर चढ़ जाती है ताकि वो उसे नेस्ट में वापस रख सके. इट इज़ द नेस्ट ऑफ अ स्पैरो. ये एक चिड़िया का घोंसला है. द स्पैरो इज़ वेरी हैप्पी एंड फ्लाइज हाई इन द स्काई. नेहा के एग वापस रखने से चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और खुशी से आसमान में उड़ने लगती है. नाउ यू कैन सी सम वर्ड्स आर अंडरलाइन इन दिस टॉपिक. कुछ वर्ड्स जो कि अंडरलाइन हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? नेहा, पार्क, नेस्ट, एग, स्पैरो एंड स्काई. All these words are called nouns. Noun is a naming word. Now you have to answer the question which is how many things can you see in your classroom? आप जब स्कूल आते हैं तो आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो अपनी क्लासरूम में देख सकते हैं? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.